Preposition is a word that shows relation between noun and pronoun or some other word there in a sentence. Preposition noun pronoun के बीच के relation बताने का काम करता है. Well, many teachers told me that preposition is a very confusing chapter. But let me tell you, there is nothing like huge confusion. There is only concept. So if you want to excel in preposition, you need to clear the concept. So let's begin that. The jug is on the table. On का मतलब होता है कि पर है. The duck is in the pond. पॉन्ड में है. सुधा जम्प्ड इनटू द रिवर मतलब मोशन दिखा रहा है. सुधा जम्प्ड इनटू द रिवर. इफ सुधा इज स्विमिंग तो स्विमिंग इन द रिवर बट जम्प्ड आउटसाइड टू इनसाइड मोशन दिखा रहा है, तो जम्प्ड इनटू द रिवर. जम्प्ड इनटू बट स्विमिंग in the river. ठीक है. Now the house is behind the tree. के पीछे है. He reached the school at 7 a.m. For short period of time we use at, and for longer period of time we use in comparatively. Like he reached the school at 7 a.m. O clock के पहले at लगाते हैं. Short period I said at dawn. He wakes up at dawn. भोर में जगता है. He sleeps at noon. He sleeps at night, at dawn, at noon. लेकिन वही अगर हो जाएगा in the morning, in the afternoon, in the evening, right? He went to sleep at night. तो went के बाद to लगाएंगे. We celebrated Independence Day on 15th August. Day is used before day and dates. Day and dates. Dates के पहले जैसे he came on Monday. He will come on 15th August. ठीक है. Now Pongal celebrations are held in January. Month और year के पहले in लगाएंगे. ठीक है. Right. After taking his bath, he came out of the river. River के बाहर निकल आया. Now let's practice about on, over, under, below, behind. Like see, like here, there is a cap on my head, and there is an umbrella over my head. So on is just touching, over is just above. A little थोड़ा सा ऊपर होगा तो above हो जाएगा. ठीक है. Like there is a pen in my pocket, and if I am putting a pen into my pocket. Motion दिखा रहे तो into हो जाएगा. Like I am putting my hand into the pocket. मोशन दिखा रहा. समथिंग इज देयर इनसाइड. कुछ पहले से पड़ा हुआ तो इन लगाएंगे. मोशन दिखा रहे हैं तो इनटू लगाएंगे. ठीक है. देयर इज अ बोर्ड बिहाइंड मी. देयर इज अ पर्सन बिसाइड मी. देयर आई एम स्टैंडिंग नियर द बोर्ड. नजदीक खड़े हैं. के पीछे बगल में. ठीक है. आई एम वॉकिंग अलोंग द बोर्ड. अलोंग का मतलब होता है किनारे किनारे. ठीक है. सो ऑल दिस शुड बी क्लियर. बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में. फॉर एग्जाम्पल अमंग इज रिटन बिटवीन एंड विद. ये दो के बीच में अमंग लिखा हुआ है. ठीक है. बिटवीन दो के बीच के लिए. अमंग और मोर देन टू. जैसे when you distribute chocolates, so you distribute chocolates among the classmates, right? So in front of के सामने, near I told you, between I told you, among I told you, with के साथ. Like I study with my friend. और जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ हो तो he cuts an apple with a knife. Okay, I write with the pen like this. Like it is 11 o'clock by my watch. So this way you can do. Like he goes to school, he goes out for a walk. Behind I told you. Above, like suppose somebody is swimming in the river. Swimming in the river. So now his head is above the water. Head is above the water. Head is below the water. Now from, like we should study from Monday to Friday. From Monday to Friday, showing duration. So I hope this is clear. See you in the next video.